हाँ जी, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। कहानी शुरू होती है जब हम गए थे 390 एडवेंचर की राइड लेने। तो उस बाइक में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे को क्या लगी थी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास जो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और उसमें हम कर रहे हैं एक मॉडिफिकेशन। और क्या है मॉडिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं आपको एक डब्बा लेके आए हम। इस डब्बे में कुछ सामान है जिससे हम कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं। सीढ़ियाँ में उतर चुके हैं, लेग्स मारी है, थोड़ी टांगों में दर्द है। तो चलो फिर चलते हैं बाइक पे और दिखाते हैं आपको कि क्या करने वाले हैं हम। तो ये आया है हमारा एक एसेसरी पार्ट, देखो जेन्युइन पार्ट्स। गैस करो क्या है। तो बताते हैं क्या कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम इस वाइजर को निकालने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही वाइट लगता है मेरे को बाइक पे। तो पहले इसको निकालते हैं फिर बताते हैं क्या मॉडिफिकेशन है। चलो तो हम बना रहे हैं इसको स्क्रैम्बलर। ये तो हट गया है, वापिस ये वाला लगाने की सोच रहा हूँ मैं। ये लगा दूँ क्या, ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जीपीएस माउंट भी निकाल दिया हमने, मोटर टॉर्क का वो भी निकाल दिया फ्रेम। अब तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम लाए हैं केटीएम की विंडशील्ड। So what I have done is I have cut it down from this side and this side a bit from here, and then we have drilled 4 holes, and these rubber spacers have been taken off from the carbon racing windshield, and now we're gonna secure it with 4 points, 1 2 3 4, and this one that is from company itself with a clamp. I'll show you where we'll be doing it. It will be like 1 2 3 and 4, these 4 holes for these 4 holes, and then we'll be putting a clamp over here. I tried to weld it but it wasn't properly welded, so I have got some clamps from my top box thing. I'll be putting them here, one this side and one this side, and luckily this thing comes right here, so we can clamp it up and it fits properly onto the bike. So another thing I'm doing is I'm putting some rubber spacer here so it fit tightly and supports the glass of the bike. It is dirty right now, I'll clean it up later. So yep, I'll be putting, I have put more spacers. So here's one spacer over here, then another one here, down there and down there, so the fitting is proper. Now the next thing, these screws. I installed a top rack over here, and these screws, they have been taken out from the stock top rack, and I'll be using them here, so they look like strong, and they are strong, and like they even support the washer. So yep, that's the another thing. Everything is taken out from the bike and is like put in, like I'm putting it back into the bike. So this is now secure and this portion is moving. So what we're gonna do is we're gonna use these clamps and use these rings, like those welded rings, and clamp it over here, and it will be all done then. So done with the clamps here and here, and now it's tough, not moving. This portion is moving, doesn't matter. This is moving, doesn't matter.
this is pretty much fixed now. So is it. This is how it looks now. Wow, nice. So this is the cockpit view with